गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग हम एयरपोर्ट से शुरू करते हैं। हमने हमारा जर्नी मुंबई से शुरू किया है एंड वी आर गोइंग टू गोवा। या सो लेट्स बिगिन। ओके, सो चेक इन करने के बाद हमें पता चला है कि हमारी फ़्लाइट डिलेड है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा टाइम लाउंज में स्पेंड कर लेते हैं। लाउंज में जाते ही हमें भूख लग चुकी है, सो हमने हमारी प्लेट्स फिल की और ये व्यू देखकर एंजॉय किया। जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर कंफ्यूजन काफ़ी बढ़ जाता है। सो फाइनली मैंने ट्रेन चूज़ किया। ओके, सो काफ़ी लेट हो चुका था। हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग सो रहे थे पीसफुली, सो उन्हें देखकर हमें भी काफ़ी नींद आ रही थी। सो वी डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी ताकि हम हमारी नींद को भगा सके। सो आई हैड माई कप एंड आई वॉज रियली इन्जॉइंग इट। लेकिन लेटर आई रियलाइज्ड कि हम स्पा में इन्जॉय कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा फ़्लाइट का समय हो चुका था। सो इट वाज टाइम टू बोर्ड द फ़्लाइट। जितनी खुशी मुझे अभी हो रही है ना फ़्लाइट में जाके, उतनी ही मुझे तकलीफ़ होने वाली है। एज़ आई सफ़र फ्रॉम मोशन सिकनेस, मुझे फ़्लाइट्स में काफ़ी तकलीफ़ होती है। सो आई कैरीड माई ग्लास ऑफ वाटर एंड आई वॉज रीडिंग अ मैगज़ीन। So we finally landed safely and we took a taxi to our hotel. होटल काफ़ी दूर था, सो वी टुक अ शॉर्ट चाय ब्रेक वाइल एंजॉइंग द व्यू। ये हम पहुंच चुके हैं हमारी होटल पर। तो सबसे पहले हमने हमारा सिक्योरिटी चेक पास किया, उसके बाद सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए। लेकिन हमें पता चलता है कि हमारा चेक इन लेट है और हम काफ़ी जल्दी पहुंच चुके हैं। हमारा रूम रेडी नहीं था। सो फॉर्चुनेटली हमें काफ़ी समय मिल गया प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। सो पूल साइड आने के बाद वी रियलाइज दैट दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल एंड द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ स्विम। सो सब कुछ छोड़कर वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू गेट इनसाइड द पूल ASAP एंड हमने वही किया। प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के बाद हम आ चुके हैं रिसेप्शन की ओर। यहाँ पर काफ़ी सारे, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट इसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया था आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ इट। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लॉट टू कवर। इफ़ आप अगर प्रॉपर्टी से कार हायर करना चाहते हैं तो ये सारी इनके चार्जेस है, आई गेस, विच इज़ बिट एक्सपेंसिव। जर्नी हमारा काफ़ी हेक्टिक हो चुका है, हम रात भर सोए नहीं हैं। सो मे बी हम अभी जाकर सो जाएंगे बिकॉज वी इवन हैड अ गुड स्विम। सो वी आर रेडी टू रेस्ट। काफ़ी लेट हो चुका था, हम हमारा लंच टाइम मिस कर चुके थे। सो आई ऑर्डर्ड फूड ऑनलाइन। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू ऑर्डर, और ये मेरे साथ हमेशा होता है।
So I ordered a lot of stuff so that we don't have to compromise या किसी का choice ना छोटे सा. I To be ordered honest, the all of it. Food was really good, worth every penny. Thank you, Chai Pattu. I really loved the meal. Lachha paratha, biryani, starters, and everything. Baba, everything. Just perfect lunch. Thank you, Baba. You're welcome. ओके सो वी आर डन विद आवर लंच और हम हमारा सारा सब कुछ क्लीन कर चुके हैं एंड लेट्स एंजॉय द व्यू. ये देखिए, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं. सो इट्स फाइनली टाइम फॉर रूम टूर. ओके सो सबसे पहले आता है वॉशरूम नंबर 1. देन ये था हमारा लिविंग एरिया विद लिटिल किचन सेटअप. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टाइप ऑफ द रूम बट इस रूम में देयर वर 2 balconies which were facing the river. So we had a river view with 2 balconies. So the total cost of the room for a day was around 15,000 or something, including breakfast. This was the second balcony, which had the same view. And this was a little room with a beautiful bathtub setup. The best part of the room were the slides, which is really useful as I love reading, so it was really beneficial for me. Coming up to the main part, we chose this property because it had a casino, so हमें कहीं और travel करने की ज़रूरत नहीं थी. So whenever we are tired, we would come back and then go back again. So for the same, we chose this property. Casino में shoot करना allowed नहीं था, so I couldn't take much pictures or videos. So for getting in, there were different packages to choose from. We chose a package. I'll add an image or add in the description box. So after we were done, we were really hungry, so we had some food and then we went back to our room. So it was the next day, early in the morning. The view was amazing. हम रेडी होकर नीचे आ चुके हैं फॉर माई फेवरेट पार्ट दैट इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट. बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉजंट फीलिंग गुड, सो आई जस्ट हैड some idli and a glass of juice for my breakfast. इतने सारे options थे still. Now it's finally time to say goodbye to this place. It's time to check out. अब वक्त आ चुका है नई जगह एक्सप्लोर करने का. So yeah, let's go. Meet you in the next vlog. Bye bye.